अगला मुकाबला महाराष्ट्र बनाम मध्य प्रदेश। रेड की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश की तरफ से। क्या अंक मिल जाएगा? डैश करके लॉबी में मध्य प्रदेश के लिए धीरू मेहरा पर दोहरी जिम्मेदारी है। एडवांस टैकल, डैश आउट करके लॉबी के बाहर। डू और डाई रेड में बिखर से गए वहां पर धीरू मेहरा। ये देखिए बढ़िया एडवांस टैक, क्या टच पॉइंट मिल जाएगा? यहां पर टैकल और आत्मघाती टैकल, सुसाइडल था ये। मध्य प्रदेश के रमात कोकोटे ने जोश में होश का अच्छी शुरुआत जरूर की है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अभी शुरुआती लम्हे मुकाबले में बहुत ज्यादा समय गुजरा नहीं है और ये बढ़त कभी भी छूट सकती है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है और वो सेंटर लाइन तक खांच जा चुकी है ऐसा लग रहा है, और जहां पे रिव्यू मांगा जा रहा है ऐसा लग रहा है वहां पर महाराष्ट्र के जो 4 नंबर के खिलाड़ी है मैच पर मौजूद महाराष्ट्र के लिए, और यहाँ पे एक बार फिर से डैश आउट करने की कोशिश थी और उसमें कामयाबी मिली नहीं। वो लाइन को जो सेंटर लाइन पर था, गिरते गिरते उनका हाथ अटका और इसकी वजह से वो कामयाबी। Gajanan Vivaji correct. Left right. Is he caught? And they pin him down pretty easy. The moment the ankle lock happened, Gajanan failing to keep his balance, and immediately the other two corners are coming in. There you see the ankle lock happened, the thigh lock, and then bang! He's caught. He's all caught. Dhiroo Mehra. This is a very, very easy takedown for the Maharashtra defense. टू और डाई की सिचुएशन से अपनी टीम को निकाले, अन्यथा उन्हें बेंच पे बैठना पड़ेगा जाकर। वो छलबलाहट दिखती हुई और डैश किए जाएंगे। डिफेंस अपना काम करती हुई यहाँ मध्य प्रदेश के लिए। Madhya Pradesh clawing back. They're doing it in some style there. Don't great now. They must get a point. Avdesh Chaudhary. Avdesh has gone back into the left corner. Will he be pushed out? Avdesh fighting for his life, but he's taken down pretty easy. So the Maharashtra revival works pretty well. Avdesh, he had in his sights the rival defense, but he just took it a little too inside the Maharashtra defense. It was up them. Avdesh Chaudhary. Avdesh, will he be able to power out? He struggles, but the 4-man defense takes him down pretty easily. There you see, that's a very powerful neck hold. मध्य प्रदेश बनाम महाराष्ट्र मुकाबले में 10-9 से महाराष्ट्र लीड जरूर कर रही है, लेकिन क्या जबरदस्त टक्कर दी है मध्य प्रदेश ने। They're making sure that they do well both in sport as well as their studies. Focus kids. A quick leap, tries to evade. He's got his man. Yes, of course. Varun Vishal delivering what was needed of him. He's got Kokote, Ramat Kokote out. Which brings us back to Samir Khan. Samir has to quickly try and neutralize the lead. Very quickly, it can all slip away. He's just got a 2-point advantage. Samir Khan, whiling his time away. Remember, 30 seconds for every raid. My fellow commentators, Vikas, who's already on the microphone with me, and even Anand Srivastav. क्योंकि एक अंक से 2 अंकों तक का फासला जरूर बढ़ गया है, लेकिन पूरी फुल फ्लेज उनके सामने महाराष्ट्र की डिफेंस क्लेम कर रहे हैं टच, और वो देखिए क्या वो टच मिला है, लेकिन वो टच क्लेम किया नहीं। हालांकि ऑफिशियल्स क्या कहना है ये देखना दिलचस्प होगा। Side of the bigger prize. Remember that it's a winner-take-all fight. Group A with the 4 teams: Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Bihar. Well, he's done it. A quick touchdown, quick takeout. Taking his time right in the middle, bang in the center, crouching low. Will he go for the bonus point? Will he be taken out? Of course he is. There are 1, 2, 3, 4 on him. 4 on him. Oh, what a takedown, but see some frayed tempers there. The Maharashtra players need to remain cool. They need to keep their calm. Samir was quickly. Prakash Jadhav bending low. They go for the ankle lock and the double lock.
but the outstretched left foot has got him off. Wow. That's literally how you decimate your opponent. He was taken down, the ankle lock was there. There was a lock on the neck. There you see the ankle lock. He lunged, tried to take him down, quick swivel, and his left foot went across the line. So it's up to Nilesh Solanki. Has to make this a super raid. Has to make this count. Will he? No, of course he doesn't. Of course he doesn't. They pound him down. It's one against many. It's not come up with a big decisive blow there. Wow, he goes for the flying evasion and he does it. He does it well. He does it well. He takes one opponent off. Will not be enough. Not raid. They get a point. Vikas Ramdas Jadhav. He's got his man. He gets his man. Crouching low, getting Akash Rawat. So Akash Rawat is off. So it's back to another 8-point lead there. Quick touch. Akash Rawat slowed the uptake. That's a quick touch. And that is a brilliant raid, it seems. He's taken 3 people out. There you see. They tried to get the ankle lock, then the shoulder lock. They managed to evade all of them. Gajanan Kure with the super raid. Nilesh Solanki flies off, gets his hand across. And the referee has to caution the Maharashtra players, which includes Anuj Gawade. They tried the ankle lock. He was too quick. He had touched the back in the mix. Nilesh, has he got himself in a soup? Yes, he has. Walks a little too inside enemy territory and is found out pretty easily there. Nilesh Solanki. You see, there was a desperate lunge to push his opponent, Gajanan Kure. Crouches low. He's got a low center of gravity. Crouching low. Will they catch him? No, he's too quick. He is too quick. And Sukhjinder Pal Singh, he didn't go for the kill. Which means now it's back to Ashwin Gaur. Ashwin, long, rangy, bony figure, Maharashtra. Vikas Ramdas Jadhav, he tries to get a flying evasion. He's taken down. First the ankle lock. He's still twisting and turning. Oh, what a struggle. He's twisting, trying his little level best, and they are yanking him off his pedals. He's got everything. He's giving everything. He's got it left in the tank. And what a struggle. Absolutely brilliant struggle there. क्या कमाल का एक्शन हमने देखा. देखिए किस तरीके से एंकल होल्ड किया, लेकिन उसके बाद से छलांग लगाई. लगातार कोशिश करते रहे वहां पर, लेकिन विकास जाधव तमाम कोशिशों के बाद वो निकल नहीं पाए. और इसी बीच एक और अंक मिलता हुआ महाराष्ट्र को, और अब फिर से वो 10 अंकों की बढ़त कायम है महाराष्ट्र के पास. सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है क्या? सुपर टैकल के लिए जा रहे थे, लेकिन वो टच आया और चला गया. क्या डैश आउट करने की कोशिश की जा रही थी, और वो उसमें कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन अब ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लिए. पहला हाफ बहुत सही गुजरा था, लेकिन इसके बाद दूसरे हाफ में बिल्कुल भी कहानी बदल सी गई है, और फिर से एक बार ऑल आउट इंपोज किया है मध्य प्रदेश के खिलाफ महाराष्ट्र ने. 5 मिनट के आसपास का समय शेष और 14 अंकों की बढ़त. एक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, आसान जीत की तरफ. Absolutely, that's the way it looks like. A titanic struggle there between both teams. At one point of time, they were going neck and neck. MP putting up a brilliant fight. The moment second quarter started, Maharashtra making sure they stepped up on the pedal. And they're racing away with the match so far. 14-point cushion for them. 34-20. Vikas Jadhav looks a little out of breath. Takes his time. He won't go for the kill. Of course he doesn't. So it's back to Samir Khan. No. Has to take his time. Taking the second time out there. Interesting the way the second time out has been taken now. Could mean a break in momentum for either team. A shade under 4:30 left on the clock. Less than 4.5 minutes left for MP to not only overturn a 14-point lead, but ensure they don't concede much and make sure they score more to overturn this deficit, or else it is Maharashtra going to make another semi-final appearance from Pool A. Less than 300 seconds of this battle left. Samir Khan tries a quick touch. Has he been locked down? He tries his lunge with his left hand, but he's been pinned down. He's been pinned down tightly.
Less than 4 minutes on the clock. This one seems to have gotten away from Madhya Pradesh. Maharashtra seems to have locked it away. Unless there is a fairy tale comeback there from the MP team. Gajanan Kurhe. Does he play safe? He has time on his hands. MP don't. Yes, he does. Make sure he takes away his opposing number 4. Gajanan Kurhe. Really well done. Now it's back to Sameer Khan. Nilesh Solanki. पहले हाफ की अगर बात करें तो, लेकिन दूसरे हाफ में जरूर निराश होंगे अपने प्रदर्शन से। इसी बीच एक एंकल होल्ड करने का प्रयास था यहाँ पर 8 नंबर की जर्सी में विशाल थे, लेकिन देखिए कितनी चतुराई के साथ उस चंगुल से बचाया अपने आप को नीलेश सोलंकी ने। और डू और डाई की सिचुएशन में इस समय महाराष्ट्र और डू और डाई की सिचुएशन से निकल नहीं पाए, और जिसकी वजह से रिवाइवल का मौका मिल गया एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लिए। 8 नंबर की जर्सी में समीर खान आए और सीधे जाके और अब फिर से एक बार नीलेश। यहाँ पर एक अच्छा टसल देखने को जरूर मिला, लेकिन 7 नंबर की जर्सी में महाराष्ट्र के लिए अनुज आए थे, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ेगा। जबरदस्त प्रदर्शन किया है और हैंडशेक कर रहे हैं समय की समाप्ति से पहले, और ये समाप्ति होती हुई मुकाबले की। हालांकि अभी लग रहा है कि एक मौका और मिलेगा। क्या इंतजार करना होगा थोड़ा और सेलिब्रेट करने के लिए। बेंच भी चला आया महाराष्ट्र का आगे, और अब आखिरकार ये फैसला आता हुआ कि समय समाप्त हो चुका है। अब आप जश्न मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र ने शिकस्त दिया है मध्य प्रदेश को 41 के मुकाबले 26 अंकों से। एक आसान जीत, जो कि एक समय ऐसा लग रही थी कि शायद ये मुकाबला नजदीकी होगा, लेकिन 15 अंकों के मार्जिन से इस मुकाबले को अपने नाम किया है महाराष्ट्र ने।